Hello student, I am Dr. S. Kandare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Vector, TI plasmid, Agrobacterium tumefaciens. So this is the title of our presentation. Here we are going to learn a vector, that is bacterium, called Agrobacterium tumefaciens. Contents: Agrobacterium tumefaciens, features of Agrobacterium tumefaciens, use of Agrobacterium tumefaciens in rDNA technology. So this is the content. Now let us see what is Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens, its updated scientific name is Rhizobium radiobacter. So this is the updated name of this bacteria, but commonly it is famous with this name, Agrobacterium tumefaciens. So we can use this name for our convenience. This bacterium is the causal agent of crown gall disease, that is formation of tumors in over 140 species of dicotyledons. It is a rod-shaped bacteria and it is kept in the category of gram-negative bacteria. It is found in the soil, so it is a soil bacterium. So this is the specialty of this bacteria. This bacteria causes a crown gall disease, isn't it? So crown gall is nothing but a tumor formation, isn't it? It is a gall. So gall means tumor or a cancerous growth in the plant. So therefore you can understand this bacterium which is present in the soil is causal agent of crown gall in most of the dicotyledons. Near about 140 species has been reported. And this bacteria very rarely or it doesn't infect the monocotyledons, but especially the host of this bacteria for pathogenic attack is dicotyledonous plants. So therefore you have to remember this bacteria is present in the soil. Now what is crown gall? Crown gall is a kind of tumor that develops upon transfer of a portion of the tumor inducing, that is TI plasmid, isn't it? This TI plasmid is present in the bacteria, that is Agrobacterium tumefaciens. The transfer of DNA, that is tDNA, into the genome of the bacterium's plant host. So here this bacteria has a tumor inducing plasmid, and this plasmid has a specific portion of DNA that is called tDNA, isn't it? So we shall see what is this tDNA. अब ये tDNA कहाँ होता है देखेंगे हम फिगर में. This bacteria affect and cause crown gall to the host plant when the plant is wounded, isn't it? So what is the condition? If the plant is wounded, the wounded plant secrete phenolics such as acetylsyringon, isn't it? This is the special chemical which is secreted by the wounded plant. When the plant is wounded, there is secretion of phenolics, and that phenolic is called acetylsyringon, isn't it? So this phenolic, that is acetylsyringon, that chemotactically instigate this bacteria, that is Agrobacterium tumefaciens, to infect plant through a protein called VIR-A, that is virulence A protein, which is present on the सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरियम. तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो बैक्टीरिया होती है ये सॉइल के अंदर होती है. अगर प्लांट को कोई वुंड हो जाती है, ज़ख़म हो जाता है, तो वो ज़ख़म के अंदर से एक फिनोलिक सब्सटेंस सिक्रेट होता है, यानी कि जो वुंड होती है प्लांट को
उसमें से फिनोलिक्स सिक्रेट होता है. इट इज़ ए काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक सब्सटेंस. जब जख्म हो जाती है प्लांट को तो वो प्लांट वहाँ ये फिनोलिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है विच इज़ कॉल्ड एसिटोसिरिंगॉन. एंड दिस स्पेसिफिक substance that is biochemical which is secreted by the wounded plant attracts this Agrobacterium tumefaciens which is present in the soil. तो ये ज़मीन के अंदर वहीं होती है, तो वहाँ पर वो जो जख्म होती है वो प्लांट को, उसमें से ये सिक्रेशन होता है और ये बैक्टीरिया ये सिक्रेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है. तो दैट इज़ कॉल्ड कीमोटैक्टिकल इंस्टिगेशन फॉर द इन्फेक्शन, इज़न्ट इट. तो ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं कीमोटैक्टिकली इंस्टिगेटेड एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल, एंड देन दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट टू द प्लांट एंड विच रिजल्ट इन टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक सिम्टम कॉल्ड क्राउन गॉल. तो ये इस किस्म का कैंसरस ट्यूमर वो प्लांट के ऊपर ग्रो होता है जहाँ ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करती है. तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो प्लांट को इन्फेक्ट करके एक किस्म का ट्यूमर और जिसे क्राउन गॉल कहते हैं वो प्रोड्यूस करती है. तो ये इस किस्म की बैक्टीरिया है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्पेसिफिक बैक्टीरिया causing a kind of disease or a kind of a tumor formation in the plant. So this is the figure of this bacterium, that is Agrobacterium tumefaciens. It is a rod-shaped bacteria. It is a gram-negative bacteria. So this is the bacteria. अब यहाँ पे ये बैक्टीरिया बताई हैं, तो you can see that this is the bacterial chromosome or main genome of the bacteria, that is Agrobacterium tumefaciens. So along with this main DNA, there is secondary DNA which is smaller in size, and this DNA is nothing but a plasmid, isn't it? And this plasmid is called Ti plasmid, that is tumor inducing plasmid. And this plasmid has a special region, a specific region that is called tDNA. And this tDNA enters and integrate into the host plant cell DNA. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये tDNA जिसे कहा जाता है Ti प्लाज्मिड का. और ये tDNA जो होता है ये इन्फेक्शन करता है और होस्ट प्लांट का जो DNA होता है वहाँ जा कर के ये tDNA उसके साथ इंटीग्रेट होता है. सो देयरफॉर दिस tDNA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस प्रकार से ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस है. ये बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन करेगा होस्ट प्लांट को तो वो इस प्रकार से वो गॉल फॉर्मेशन होता है. सो हियर क्राउन गॉल बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्राउन गॉल यहाँ पे डेवलप हो गया. तो इस प्रकार से ये नज़र आता है. सो एक किस्म का क्राउन गॉल यानी कि ट्यूमर है, एक कैंसरस ग्रोथ है, इज़न्ट इट. सो ये इस प्रकार से ट्यूमर ये प्लांट के ऊपर बढ़ता है. तो यू कैन सी दिस इज़ द क्राउन रीजन ऑफ द प्लांट. ये जो रीजन है जो ज़मीन के पास होता है, द रीजन विच इज़ एडजेसेंट टू द सॉइल, ये प्लांट का जो रीजन होता है जहाँ पे ये स्टेम है और नीचे ज़मीन के अंदर रूट्स है. और ये जो पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड क्राउन ऑफ द प्लांट. और यहाँ पे दिस प्लांट इज़ वुंडेड एंड हियर the agrobacterium infected to the plant, and here you can see this is the tumor formation by Agrobacterium tumefaciens. So in this way this is the tumor forming bacteria. अब ये जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करने का जो कैपेसिटी है, दिस इन्फेक्टिव पोटेंशियल ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस इज यूटिलाइज्ड इन दिस rDNA टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि इसका जो इन्फेक्शन करने का जो क्षमता है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियन का, तो ये इन्फेक्शन करके इस प्रकार से क्राउन गॉल जो प्रोड्यूस करता है, ये क्षमता हमने हमारे टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया है, rDNA टेक्नोलॉजी में. सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस बैक्टीरिया.
So what are the features of TI plasmid? Now, as I told you, this bacteria has a special plasmid called tumor-inducing plasmid, or in short, it is called TI plasmid. So what are the features of this TI plasmid? The TI plasmid stands for tumor-inducing plasmid, isn't it? Present in the soil, gram-negative bacteria, that is Agrobacterium tumefaciens. So ये सॉइल के अंदर पाए जाने वाली बैक्टीरिया है, और उसका जो हमने यहाँ नाम लिखा है टीआई प्लाज्मिड, तो ये टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, isn't it? So that is the full form of this TI. It occurs in double stranded form. ये जो TI plasmid होता है, it is a double stranded plasmid with 250 kilobase pair molecule होता है. ये एक उसका साइज यहाँ पे दिया है 200 kbp, 250 किलोबेस पेयर का ये DNA मॉलिक्यूल होता है. That is its size. The bacterium is pathogenic, isn't it? This bacterium is pathogenic because it causes crown gall to the dicotyledonous plants. इसीलिए इसको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहता है, because it causes a kind of disease, isn't it? A kind of tumor. So therefore this bacteria is pathogenic bacteria. It has significant part called tDNA region, that is transfer DNA, isn't it? ये tDNA का मतलब होता है कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं TI प्लाज्मिड, उसके ऊपर एक tDNA नाम का एक छोटा सा रीजन होता है, एक सेक्शन होता है, and that tDNA is nothing but transfer DNA, and this transfer DNA cause tumor in the host plant. और ये tDNA जो होता है होस्ट प्लांट के अंदर जा करके होस्ट का जो DNA होता है, प्लांट का जो DNA होता है, उसके साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है. तो ये tDNA बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर. The T region, that is tDNA region, has a right and left border on either side, and it help in transfer of tDNA into the plant cell. अब ये tDNA जो होता है इसके ऊपर एक स्पेशल सीक्वेंस होता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में. तो फिगर देखने के बाद आपको समझ में आएगा. सो देयर इज राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं वहाँ पे tDNA के ऊपर, एंड दिस tDNA के ऊपर जो ये जो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर्स होते हैं, ये प्लांट के अंदर ये tDNA को इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं. देयर आर जीन्स ऑन द tDNA सेगमेंट. अब ये tDNA जो होता है उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, isn't it? tDNA segment of TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens for auxin, cytokinin and opine production, isn't it? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन प्रोडक्शन के कुछ जीन्स ये tDNA के ऊपर होते हैं. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो ये TI प्लाज्मिड के ऊपर जो tDNA का सेगमेंट होता है, पोर्शन होता है, उसके ऊपर कुछ जीन्स होते हैं जो ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करते हैं, ओपाइंस नाम के कोई स्पेशल अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं. ओपाइंस आर स्पेशल अमाइनो एसिड्स. उसके ये प्रकार है. सो दीज आर द ओपाइंस. सो सी हियर नोपैलाइन, octopine, leucinopine. So these are the names of special opines. So opines are nothing but special amino acids, and these amino acids are produced by the bacterial DNA. And these amino acids called as metabolites are useful for the bacterium and not for the plant. अब ये जो opines होते हैं, ये opines स्पेशल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसके नाम है नोपैलाइन, ऑक्टोपाइन, ल्यूसिनोपाइन, ये है. तो ये जो अमाइनो एसिड्स है ये बैक्टीरिया के काम की चीज़ है, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए वो यूज़ किया जाता है.
प्लांट के लिए कोई यूजफुल नहीं है, लेकिन दिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स and enters into the plant cell and produces these opines, and these opines are useful for the bacteria Agrobacterium tumefaciens. ये प्लांट के लिए कोई उपयुक्त इस प्रकार के कोई ओपाइंस नहीं है, अमीनो एसिड्स नहीं है, बट दीज आर यूजफुल फॉर बैक्टीरिया. ओके, देयर इज अनदर जीन फॉर ओपाइन कैटाबोलिज्म, इजंट इट. उसके बाद में ये ओपाइन कैटाबोलिज्म का जो जीन होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर द ओपाइन मेटाबॉलिज्म, इजंट इट. ओपाइन कैटाबोलिज्म जो जीन होता है उसके ऊपर, that gene is useful for opine metabolism and it is useful for the bacteria. There is another region or gene that's called virulence region for pathogenicity. अब ये वायरुलेंस जीन होता है, वहाँ पे एक सेक्शन होता है वायरुलेंस रीजन, isn't it? And this virulence region is helpful for pathogenicity of the bacteria. इन्फेक्शन करने के लिए वायरुलेंस जीन काम आता है. बाद में वहाँ पे ORI ओरी रीजन होता है, एंड दिस रीजन इज यूजफुल फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होने के लिए दिस ओरी रीजन इज यूजफुल. सो इन दिस वे यू विल फाइंड दैट देर आर दीज साइट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द TDNA, isn't it? स्पेशल सेगमेंट जैसे मैंने बताया कि TDNA is a special segment that is present on the TI plasmid. और ये T सेगमेंट के अंदर ये सारे जीन्स होते हैं, जीन्स फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन, जीन्स फॉर साइटोकाइनिन प्रोडक्शन, जीन्स फॉर ओपाइन प्रोडक्शन, देन जीन्स फॉर वायरुलेंस, जीन्स फॉर ORI region, that is origin of replication. So these things are very very important. इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये TDNA के ऊपर ये इतने सारे सेगमेंट्स होते हैं, जीन्स के रीजन्स होते हैं, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीजन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द TDNA. Agrobacterium tumefaciens has ability to genetically transform host cell. तो ये जो Agrobacterium tumefaciens है, इट हैज़ एबिलिटी टू जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म द होस्ट सेल. तो क्योंकि ये होस्ट का जो सेल होता है, प्लांट का जो सेल होता है, उसके अंदर जा कर के एग्रोबैक्टीरियम का जो DNA है वो इंटीग्रेट हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, और पूरा की पूरा वो जो प्लांट का सेल है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है जेनेटिकली. हेंस इट कुड बी यूज्ड इन द RDNA टेक्नोलॉजी. इसीलिए ये जो कैपेसिटी है उसका होस्ट प्लांट को ट्रांसफॉर्म करने का, दैट कैपेसिटी कैन बी यूज्ड इन RDNA टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन का पैथोजेनिक एबिलिटी है, दैट पैथोजेनिक एबिलिटी इज यूज्ड इन RDNA टेक्नोलॉजी. देयरफॉर द बैक्टीरिया कुड बी इंजीनियर्ड एज ए वेक्टर. तो ये बहुत अच्छी वेक्टर के तौर पे काम करती है ये बैक्टीरिया. तो हम देखते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द फेमस वेक्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये बहुत ही फेमस किस्म की बैक्टीरिया है RDNA टेक्नोलॉजी में. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ TI plasmid. So here you can see the figure, isn't it? So whatever we have learned in the previous slide is illustrated in this figure. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि this is the TI plasmid. Okay, this entire circular double stranded DNA molecule is called TI plasmid, that is tumor inducing plasmid. Okay, this TI plasmid has a specific region which is marked with this blue line. So ये blue line जहाँ तक बताई हैं, यहाँ से ले करके यहाँ तक ये TI plasmid का TDNA region है, and this is very very important and significant region from the point of view of infection to the host plant. तो ये बहुत important region है, this TDNA region, that is transfer DNA region कहते हैं इसको. Now as I have told you in the previous slide, it has
left border and right border. So this border contains a specific gene sequence, isn't it? And this border contains some genes. तो ये जो जीन्स होते हैं यहाँ पर राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर, so these genes help in the integration of this tDNA region into the host cell, isn't it? What is the function of these left and right border genes? These genes help this tDNA region to integrate into the host genome. Okay, then you can see here another genes are there: auxin producing genes, cytokinin producing genes, opine producing genes, isn't it? So we have discussed in a previous slide that opines are produced. Opines are nothing but special amino acids, and these amino acids are not useful for the plant, but these amino acids are the metabolites of the Agrobacterium tumefaciens. So this opine producing genes produces specific opines. Isn't it? Another gene region is there, that is opine catabolism gene. So whatever opines are generated through these genes are catabolized with the help of these genes. So opine catabolism genes are here, and these genes help to metabolize and catabolize this opine produced by these genes, isn't it? Now here you can see ORI region, that is origin of replication region. This region helps to autonomously replicate this TI plasmid. Okay, उसके replication के लिए ये origin of replication is also one of the important site which is present on the TI plasmid. Another important region is virulence region. So virulence means the infective capacity, isn't it? Infective potential of the TI plasmid or this bacterial plasmid, उसका जो इन्फेक्शन का कैपेसिटी होता है वो यहाँ पर होता है. So whatever the genes present in this section are called virulence region, and these virulence region genes helps to infect and integrate this TI plasmid into the host cell. तो इसका ये इन्फेक्टिव कैपेसिटी जो होता है, infection potential is located in this region, virulence region. So this is the entire aspect of the TI plasmid. So therefore we have to emphasize and keep in mind that this TI plasmid, this tDNA region is very, very important, because most of the significant genes, infection causing genes, opine producing genes are present in this tDNA region of the Agrobacterium TI plasmid. So what are the specialities and functions of these particular genes? So here auxin gene, isn't it? So what is this auxin gene? It produces auxins that causes proliferation of cells and it causes uncontrolled mitosis. तो ऑक्सीजन इतना प्रोड्यूस होते रहता है कि वो माइटोसिस और सेल डिवीजन करते ही जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ. देन साइटोकाइनिन जीन्स प्रोड्यूस साइटोकाइनिन्स दैट कॉज ट्यूमर फॉर्मेशन थ्रू अनकंट्रोल्ड माइटोसिस. सेल का एडिशन होते रहता है. सो देयरफॉर यू कैन सी दिस ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस pathogenic bacterial region, and these auxin and cytokinin cause proliferation of the cells, and proliferation of the cells result into the formation of tumor. तो ये कैंसरस ग्रोथ यानी कि ट्यूमर फॉर्मेशन में ये जीन्स और उसके प्रोडक्ट काम करते हैं. देन अनदर ग्रुप ऑफ जीन इज हियर ओपाइन जीन्स, and these opine genes produce amino acids, and these amino acids are only useful for the bacteria. So what are these amino acids? As I told you, nopalin, ectopine, leucinopine. These are the few names of these opines that are useful for the bacterium and not for plant.
So these amino acids, isn't it, metabolites are useful for the bacterium. यानी कि ये जो बैक्टीरिया जब होस्ट सेल के अंदर चली जाती है और ये जीन्स जब होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं तो उस वक्त वो प्लांट सेल के अंदर ये बैक्टीरिया के लिए जो अमीनो एसिड्स और ओपाइंस काम में आते हैं वो प्रोडक्शन होना शुरू हो जाते हैं, इज़न्ट इट। बैक्टीरिया के लिए सारे ये जो मेटाबोलाइट्स है वो काम की चीज़ है, प्लांट के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है ये। तो आप देख सकते हैं कि जब ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस प्लांट के अंदर जाएगा, प्लांट के सेल का कंट्रोल लेगा और वहाँ पर ये सारे बायोकेमिकल्स वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये वो बैक्टीरिया के लिए वो काम में आने वाली चीज़ है यहाँ, isn't it? These metabolites are not useful to the plant. तो किस प्रकार से ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नाम का जो बैक्टीरिया है ये प्लांट सेल को हैजैक कर लेता है और उसके अंदर कुछ और किस्म के बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस tDNA region, isn't it? That you have to remember. देन ओपाइन जो प्रोड्यूस हो जाता है उसका कैटाबोलिज्म करना पड़ता है, उसका यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए ये ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन्स काम करते हैं एंड दिस जीन्स हेल्प यूटिलाइजेशन ऑफ ओपाइंस बाय द बैक्टीरिया, उसका ब्रेक डाउन करना और उसका यूटिलाइजेशन करना, ये काम ये ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन का है। देन ओरी, एज वी हैव डिस्कस्ड ओरी रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये जो है तो जीन है एंड दिस हेल्प द प्लाज्मिड टू ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट, इजंट इट, इसका रेप्लिकेशन के लिए काम आता है। वायरुलेंस जीन जैसा मैंने बताया, इट हेल्प्स टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया टू द होस्ट। तो इन्फेक्शन का जो भी पावर है ये वायरुलेंस जीन के मार्फत आता है। सो वट एवर द पावर ऑफ इन्फेक्शन इज imparted to the bacteria is due to this particular gene region. Okay, so in this way you will find that this Agrobacterium ti plasmid has these components and these genes. So this is the genetic composition of ti plasmid. अभी ये जो ti plasmid है तो इसका एप्लीकेशन हम rDNA टेक्नोलॉजी के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर किस प्रकार से कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस विथ इट्स मेन डीएनए और मेन जीनोम एंड दिस इज द प्लाज्मिड, इट इज द सेकेंडरी काइंड ऑफ डीएनए। सो ये जो होगा इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। नाउ दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस हैज दिस प्लाज्मिड. So see here, this is the Ti plasmid and here you can see this is the tDNA region, isn't it? अब यहाँ पे क्या होता है कि during this rDNA technology there is restriction site which is present in the tDNA. तो इसके अंदर restriction enzyme की मदद से यहाँ पे we can make a cut and when this particular tDNA is made cut in this region with the help of restriction enzymes, we can introduce a DNA, a segment of DNA containing a gene for desired trait, और उसे हम कह सकते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, isn't it? अब यहाँ पर क्या होगा कि ये Ti प्लाज्मिड आइसोलेट किया and then we made a cut here with the help of restriction enzyme and another gene from another source that is called gene of interest or gene of desired trait. That gene is isolated with the same restriction enzyme and this isolated segment of the gene is introduced into the Ti plasmid. So insertion of gene into the plasmid using restriction enzyme and DNA ligase. तो यहाँ पर
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद ये अनदर जीन, isn't it, is inserted into this plasmid. यहाँ पर देखिए ये कट करके यहाँ पे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया है और इसको लाइगेज जीन से फिर से सील कर दिया है. तो अभी ये बन गया रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड, isn't it? तो this is the thing we are doing here, isn't it? We are using the capacity of this TI plasmid for rDNA technology, isn't it? तो यहाँ लेबोरेटरी के अंदर हम ये सब जो टेक्निक है rDNA की टेक्निक वहाँ पर इस्तेमाल करके we are introducing the gene of interest, and in this way we are producing a recombinant TI plasmid. Now this recombinant TI plasmid can be introduced into the plant cell, isn't it? उसका infection हम कर सकते हैं. Now here you can see isolated plant cell in the laboratory, isn't it? The plant cell with its genome, ये plant cell के अंदर का ये DNA यानी कि क्रोमोसोम यहाँ पता है, isn't it? So introduction into the plant cells in culture. So in plant tissue culture in laboratory we can carry out this method. So here ये दूसरे स्टेप में हमने बताया कि introduction into the plant cells in culture, isn't it? So here you can see this tDNA portion can be integrated into the plant cell, isn't it? So tDNA carrying new gene within plant chromosome. अब ये प्लांट सेल में जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ये tDNA ट्रांसफ़र कर दिया है, isn't it? इधर वो इंटीग्रेट हो गया. And in this way here you can see regeneration of plant in laboratory in plant tissue culture. The plant with new trait. तो ये प्लांट के अंदर नए कुछ गुणधर्म या कोई नए ट्रेट्स इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं. So here it can be summarized that this Agrobacterium tumefaciens and its capacity of infection to the plant cell can be utilized for our purpose, isn't it? So we are doing rDNA technology methods, we are applying that techniques here, we are cutting this portion of the tDNA with the restriction enzyme and we are inserting a specific desired gene, isn't it, or gene of interest into the TI plasmid and converting it into recombinant DNA, that is rDNA. And this recombined DNA is again introduced into the plant cell, and this tDNA portion gets integrated into the plant genome, and therefore this integrated new gene is expressed into the new plant, isn't it? Regeneration of this plant can be carried out in plant tissue culture laboratory. So in this way, this is the overall and a general what can say summary of application of Agrobacterium in rDNA technology. So in this way we can utilize this Agrobacterium tumefaciens in rDNA और recombinant DNA टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन ये बैक्टीरिया की इन्फेक्शन और पैथोजेनिक एबिलिटी हम rDNA में यूज़ कर सकते हैं. So this is the thing that you have to understand. Okay, so thank you, and review this presentation repeatedly to understand the topic. Okay, so prepare your own notes based on this presentation. So friends, thank you.